Hello students, our today's topic is define financial statement. For defining financial statement, we have created our balance sheet and profit and loss and their items, and we assign the basic items on that. Now we will assign the ledgers to our items. For that we can go SAP. अब यहाँ पर हम सैप में लेजर्स असाइन करने के लिए सबसे पहले जाते हैं एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, click on assign and enter 1 lakh to 100010. Click on debit and credit and then click on continue button. Double click on it, enter the name for end of group and then click on trade receivables. Okay, current assets and end of group total assets less current liabilities. Non-current assets, डबल क्लिक ऑन ट्रेड रिसीवेबल, एंड ऑफ ग्रुप. ये सब आपको असाइन करना है. प्रीपेमेंट्स, बैंक, सेम फॉर नॉन करंट्स. अब ट्रेड रिसीवेबल सिलेक्ट करते हैं बैंक एंड क्लिक ऑन असाइन 11,000 to 11,000 10. Debit credit, click on continue. Next, click on tax deductible. Select on assign 120000. Debit and credit, then click on continue. Next, trade receivable, double click on it, enter, click on assignment 150000, debit or credit, click on continue button. Then click on prepayments, assign accounts 150010, 150020, debit and credit, debit and credit. Next, again select prepayments and add 15
0050 डेबिट एंड क्रेडिट। ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में हमने जीरो बैलेंसिंग क्लियरिंग जनरेट नहीं किया है, तो सिलेक्ट करो करंट एसेट्स को एंड देन क्रिएट आइटम जीरो बैलेंसिंग क्लियर, जीरो बैलेंस क्लियरिंग। Then click on continue, double click on it, just give the name and now assign accounts. One 800,000 debit and credit, continue, and now select zero balance and click on prepayments and then click on reassign. Zero balance, select prepayments, reassign to subordinate level. ओके, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट रीअसाइन टू सबऑर्डिनेट। इसको डिलीट कर दो, सेलेक्ट प्रीपेमेंट्स, सेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट रीअसाइन सबऑर्डिनेट। ओके, नो इशू, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नाउ सेलेक्ट प्रीपेमेंट्स, click on create items, zero balance clearing, select it and then click on assign 180000 debit and credit। ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। अब बैलेंस शीट में हमारा बैलेंस शीट एडजस्टमेंट बाकी है, तो बैलेंस शीट एडजस्टमेंट लेजर क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट बैलेंस शीट, क्रिएट आइटम्स, बैलेंस एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, then click on continue and now double click on it, enter the end of group, click on continue, then select and assign 190020 debit and credit। Now select liabilities, current liabilities, trade tax payables, end of group, assign account 220000
continue. Next, trade payables, double click and end of group, click assign 250000 जो हमने लेजर्स क्रिएट किए थे वो हम असाइन करते. नेक्स्ट, select current liabilities and click on create items, prepayment to vendor or customer, continue. Now select it and click on assign item, assign accounts, enter the GL numbers, and then click on continue. Now click on save button, click on save. Now we will assign expense ledger, expand expenses, click on purchases, end of group, end of group, कंटिन्यू. यूटिलिटीज को भी दे देते, हर किसी को एंड ऑफ ग्रुप नेम आएगा. बैंक एक्सपेंसेस, administrative expenses, operative expenses, cost of sales, exchange rate loss, cash discount expenses, loan from currency valuation, and clearing loss from translation. Now double click on now select purchases and click on assign accounts and assign the ledgers. 5000 debit and credit, continue. Then click on utilities, then assign accounts 50001, 2 and 3. Debit and credit tick, click on continue. Then select bank expenses, assign accounts, enter the ledger 500010, 500030, debit and credit. And again select it and assign. Now select expense allowed, assign accounts, enter 525000, debit and credit. Now select exchange rate loss and assign account 590010, 20, 30 and 40, debit, credit.
loans from currency valuation, assign, ओके ये हमें नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देते हैं। लोन्स को सेलेक्ट क्लियरिंग, असाइन के क्लियरिंग भी डिलीट करते हैं। कैश डिस्काउंट असाइन 58001000 and 580001 debit and credit. Continue. Now we will assign revenue, sales, double click, end of group, sales on commission, end of group, exchange rate gain, end of group, cash discount gain, end of group, gain from currency valuation, end of group, clearing gain from, end of group, and revenue, end of group. Double click on revenue, end of group, total revenue. Expenses, total expenses. Now select sales and assign 60000 debit and credit. Now select sales on commission or exchange rate gain, assign 690010 690020 690030 690040. Continue. Next, now select gain from currency and clearing gain from currency and delete it. Then revenue, assign 625000. Again select it, click on assign, enter, cash discount gain, select on assign 680000, then debit and credit, click on continue button. Now select profit and loss and then click on create items, enter secondary cost element. Click on continue, double click on it, end of group, and then click on assign 90000
and 99999. Then click on debit and credit. Now click on save button. Save. Now click on check button. तो यहाँ पर हम चेक करेंगे. Now select on account assigned to one side only. Enter your chart of account. Enter your company code account, and then click on continue button. Okay, just check it. Close button. Now select retain earning accounts and then click on create items, retain earnings GL account. Click on continue button, double click on it, enter the end of group and enter, click on assign and enter our GS. Eight and 9. डेबिट क्रेडिट कंटिन्यू. एक बार सेलेक्ट चेक कर लेते हैं. ओके, रिटेन अर्निंग्स, टोटल रिटेन अर्निंग्स. कंटिन्यू. शेयर होल्डर्स इक्विटी, एंड ऑफ ग्रुप, long term borrowings, end of group, non current liabilities, total non current liabilities, current liabilities, total current liabilities. डबल क्लिक एंड एंड ऑफ ग्रुप में आपको उसका नाम देना है ताकि उसकी टोटल हो. ट्रेड पेएबल्स, टैक्स पेएबल्स एंड एक्रूअल्स. हर एक को चेक कर लो एक बार कि हर किसी का एंड ऑफ ग्रुप हमने दिया है या नहीं. Accruals, liabilities, total liabilities, balance sheet adjustment, balance sheet, profit and loss account, अब करते हैं फिर से चेक. सेव करो, क्लिक ऑन सेव. Select check button, continue. Okay.
Okay, just come back. अब again click on save button and then activate. Continue. Again click on continue button. तो ये हो गया हमारा GL असाइन.